Hello guys, welcome to the Manu Education. So today in this video we'll talk about one of the important point, and that is nothing but let's evaluate your preparation. Let's evaluate yourself and also your preparation. Yes guys, possible by giving the number of mock tests, because once you will give the mock test you will be familiar with lot of points. Stay tuned with me to know what are the benefits of giving the mock test. So guys, there are the three stages of the preparations. The very first one, the basic. Lot of students start with the basic funda, they clear overall concept there, and later on they move to the practice part. Now those students who first clear their concepts and directly move to the mock test. So here they give the mock test and then directly they are ready for the exam. So what exactly the difference between these 3 points? First one, those students who prepared their basic funda first, then directly move to the mock test. These are 5 to 10% स्टूडेंट्स जिनका बेसिक पहले से थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं. नंबर ऑफ मॉक टेस्ट से सारा एनालिसिस हो जाता है एंड देन दे मूव टू द प्रिपरेशन पार्ट. जहाँ लैग कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को स्ट्रांग जोन बना लो, जो भी हमारे वीक सेक्शंस है उसको स्ट्रांग बना लो, एंड दिस वे दे बूस्ट देयर प्रिपरेशंस. सेकेंड वन, दो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स कुछ कम है, पहले बेसिक्स को क्लियर करेंगे, उसके बाद वो करेंगे प्रैक्टिस पार्ट. अब ये प्रैक्टिस उनके टाइम के ऊपर डिपेंड होती है, जितना टाइम उनके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से. अगर ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो वो उनकी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे, एंड इफ दे हैव लेस टाइम देन लेस प्रैक्टिस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ मॉक टेस्ट. सो दिस इज द सेकंड टाइप. थर्ड वन, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बेसिक को हाथ नहीं लगाते, डायरेक्टली दे स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट. बस नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना है एंड एग्जाम क्रैक करना है. यस, such type of students also there. So guys, in all these stages what is the common point? The mock test. Give the number of mock test and get analyze yourself. So what are the benefits? Stay tuned with me. So guys, here we'll talk about the mock test and the past paper analysis. If you will give the mock test then you will be familiar with the paper pattern. अब paper pattern में पेपर पैटर्न कैसे सेट किया गया, कौन से सेक्शंस को ज़्यादा वेटेज है, कौन से टॉपिक को कम वेटेज है, आप कहाँ फोकस कर सकते हो, कौन से टॉपिक आप मूव कर सकते हो. ओके गाइस, सो व्हाट आर द सेक्शंस टू फोकस मोर एंड व्हाट आर द लेस. सो यू कैन जज आपके पसंदीदा टॉपिक कौन से हैं जहां आपको फोकस ज़्यादा करना है, और कौन से आपके ऐसे वीक सेक्शन हैं जहां आप अगर फोकस नहीं भी करोगे तो भी आपके मार्क्स कम होने के चांसेस कम होंगे. ओके, सो फर्स्ट वन, पेपर पैटर्न. Second one, the question framing. How the questions are framed. Okay, once you will be familiar, questions इस तरह से फ्रेम किए गए, आपको पता होगा ये सिंपल क्वेश्चंस है, परसेंटेज का क्वेश्चंस है, काफ़ी सिंपल है, बट इसे घुमा फिरा कर पूछा गया है. सो वंस यू विल बी फेमिलियर विद दैट कि क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया गया है, देन कोई भी क्वेश्चंस हो आपको तुरंत पता चलेगा. राइट गाइज, thereafter you will be familiar with the levels of the exam, either easy level, moderate, difficult और advanced levels के questions पूछे गए. कौन कौन से questions कैसे कैसे ढंग से पूछ सकते हैं, you will get the idea of that. Thereafter you will be familiar with your strong sections and the weak sections. What are your strong sections and weak sections? Then you can focus more. Once you will be familiar with weak sections, आपको ज़्यादा जोर देना है. Strong sections आप उसे less time दे सकते हो. After all these features, paper pattern, question framing, levels and the section, आप अपना scoring area जान सकते हो. So let's focus more on that particular section. अगर English में ज़्यादा score कर रहे हो, then focus more on that particular area also to get more score. So once you will give the mock test, then you will make your strategies. आपको पता चल जाएगा paper pattern ऐसा होगा, question framing, what are the levels, what are my strong zone, weak zone, what are my scoring areas, so you can make the strategies according to it. So first analyze yourself at which particular stage you are, below average, average, satisfactory or excellent. Just analyze yourself and start preparation accordingly. So preparations कैसे start करना है, first analyze करना है, कितने marks है आपके, first how many questions you solved in the first mock test, below 80 or 80, just multiply it by 4 and your composite score is 320. यहाँ कोई टॉप IHM मिलेगा, yes or no? No guys, आपको प्रिपरेशन करते रहना है. सेकेंड मॉक टेस्ट 100 अप आना ही चाहिए, थर्ड मॉक टेस्ट 120, फोर्थ 140,
160 up. If you want to enter into the IHM Pusa and IHM Mumbai, guys 160 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही है. टारगेट 170 to 180 आपके करेक्ट क्वेश्चंस होने ही चाहिए. ओके, आई नो नंबर्स काफ़ी हाई है, बट गाइज कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो गोइंग टफर ईच ईयर. सो दैट्स वाई सेफ टारगेट रखना है 140 to 160. कोई प्रॉब्लम नहीं, you will easily enter into the top IHM. Whatever preparation you have done, just start giving the mock test. Preparation कितना भी हो, first mock test, then second, then move to the third, fourth, fifth. Give n number of mock test. Past year के paper analysis करो. Just sort out everything and then start your preparation according to this. Okay, guys. So where exactly you will get all these features, the mock test and the past year paper? Okay, just come at manuedu.com. Then come to the buy online section. Hotel management. Now these all are the programs: full course, book, study materials, sectional course, and the mock test. So guys, if you want a preparation also, just click on full course. Here it is, the hotel management IHM video lecture, mock test, 16 section wise mock test and 10 full length mock test. In this package you will get the past year papers and also the handouts for the practice purpose. So just click on the view details. This will include 325 video lectures with respect to each particular topic, 100 handouts, lot of data for the practice, and the 26 mock test. And also if you want to prepare for 2022 and 2023 programs, guys, these all are the respective programs. Enroll as per your need. Now if you want to give the mock test only, just click on the mock test. Now here you will get the topic test also and the full length mock test also. Topic test with respect to quant you will get 48 tests. With respect to logic 62, with respect to English 22, and GK 20 mock test. If you want a full length mock test, 16 sectional tests and 10 full length mock tests, 26 mock tests, and that's enough, guys. So this is all from the today's video. Contact us for live class preparations. Call on all these respective numbers. And if you want all these stuffs, the sectional course, mock test, book, study materials, and the full course, guys, visit manuedu.com/hotel management. Okay. For all exam updates and the notifications, you can follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. Guys, all link I mentioned in the description. Kindly check those links and don't forget to subscribe our new YouTube channel, Manua Hotel Management. So this is all, guys. Thank you very much. See you in the next video.